Good morning student. Next topic of aggregate demand is consumption function. Okay, so what is consumption function? Okay, let us see over here. The consumption function is the relationship between C and Y. C is the consumption and Y is the income. Okay, so it means consumption is totally related with the income. It means if income is increases, consumption is increases, income decreases, it leads to decrease in कंजप्शन एज वेल. ओके, लेट अस सी ओवर हियर. अगर आपकी इनकम 100 रुपये है तो कंजप्शन जो है अर्लियर इफ इट वाज 25 देन इट विल इंक्रीज टू 50. सेम एज इट इज इफ income is increasing from 100 to 150, so in the same way consumption will also increase. Okay, so that means it has a positive relationship with the income. Okay, so keep it in your mind, this thing, this is very important, that income and consumption have a positive relationship. Okay, next, when income is zero, there is always minimum level of consumption. In the previous video also I have discussed regarding the same, that if the income is zero, you can see it over here also, that if a person income is zero, मतलब वो बिल्कुल अर्न नहीं कर रहा है, तब भी कंजप्शन जो है वहाँ पर रहती है. ओके, इफ़ यू विल सी दिस सिनारो, अभी का आप टाइम देखेंगे तो पीपल आर नॉट वर्किंग. ओके, मेनी पीपल आर नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, सो देयर इनकम इज जीरो. टिल देन दे आर डूइंग कंजप्शन. ओके, विच इज़ कॉल्ड minimum level of consumption, which is also called autonomous consumption as denoted by C bar. Okay, so income is zero, consumption is always there, which is called autonomous consumption, which is denoted by C bar, and it leads to minus saving. Okay, you can see over here, if income is zero, consumption is 20, so obviously the saving is going to be minus 20. Okay, next is income increases, consumption increases also. And one more thing, that entire income, okay, if a person is earning 100 rupees, that 100 rupee is not converted into consumption. Some part is, अगर आपकी इनकम 100 रुपये है तो 100 के 100 जो है वो कंजप्शन नहीं जाते हैं. सम पार्ट इज कंज्यूम्ड एंड सम इज सेव्ड. ओके, इट मीन्स 70 कंज्यूम्ड एंड 30 इज सेव्ड. ओके, so entire income is not consumed or converted into C, a part of it is saved, so Y is equal to C plus S. Okay, just think, remember it again. AD is equal to C plus I, AS is equal to C plus S. I hope it is clear to you now. Okay, so now you can see that consumption function schedule already I have discussed in the previous video. Schedule means table. Okay, here I have showed the table. Okay, consumption function schedule, it means table of income and consumption. That means if you will see here, that income is 0, consumption is 20. Income is increasing in a constant ratio of 40, 80, 120, 160. So if you will see here, income is 0 and consumption is 20, 40, 50. So here you can see that income is less than consumption and saving is negative. Okay, here if you will see 80, 80, it means whatever the person is having the income, the total income has been consumed. So C is equal to Y, saving is equal to 0. So this is also called break even point. Okay, I am repeating, this is called break even point. अगर आप नेक्स्ट देखो तो इनकम जो है वो बढ़ रही है और कंजप्शन जो है वो इनकम के इक्विवेलेंट नहीं बढ़ रही है अब. ठीक है, अर्लियर इट वाज इंक्रीजिंग इक्विवेलेंट टू इनकम, बट नाउ इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग इक्विवेलेंट टू इनकम. अब कुछ पार्ट जो है वो सेविंग में जा रहा है. इट मीन्स वाई इज मोर देन सी, सो सेविंग इज पॉजिटिव. ओके, you can show it by, I have shown it here by the consumption function curve. Okay, income I told you earlier. Okay, let me show you here that this is your income. Okay, which is making 45-degree angle. As I told you earlier also, consumption never start from the point of origin, it starts from here. So this is the point of break even point where Y is equal to C, or you can say that saving is equal to 0. Okay, if you will see here this area, okay, this is consumption, this is income. तो अगर आप देखो तो कंजप्शन लाइन जो है वो ऊपर है इनकम लाइन के. सो हेयर C इज मोर देन Y, और यहाँ पर सेविंग जो है वो क्या है, नेगेटिव है. ओके, नाउ सी इट ओवर हियर. आप देखो इनकम यहाँ ऊपर लाइन जा रही है, कंजप्शन नीचे. सो हेयर इनकम इज मोर देन कंजप्शन. सो यहाँ पर सेविंग्स क्या है, पॉजिटिव सेविंग्स आर देयर.
Okay, I hope it is clear to you now. Okay, income is shown on our x-axis and y-axis we are showing the consumption. Fine. So this is the diagrammatic presentation of consumption function curve. Okay, now next is the slope of C line. Slope of C line, as C line is started from here. Okay, so this is the slope of C line. Okay, slope is MPC, marginal propensity to consume. Okay, marginal propensity to consume, which is showing here. We have shown income, here we have shown consumption. So this is showing change in Y, change in C. Okay, so MPC or slope of C line is change in C upon change in Y. Okay, it refers to the rate at which C increases in response to income. It means आपकी जो income है, आपकी जो consumption है वो income के accordingly change हो रही है. It is the ratio between change in consumption and change in income. It is also known as marginal propensity to consume. Now the question, why it is called marginal propensity? Marginal means additional. Okay, and additional is always changing. Fine, ये याद रखिएगा, मार्जिन मीन्स एडिशनल और एडिशनल हमेशा चेंज होता है. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एमपीसी. एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई. ओके, सो अनदर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. वी हैव टू टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी, एमपीसी. ओके, एमपीसी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सी टू चेंज इन वाई. APC is the ratio to total consumption to total income. You can see over here, APC is equal to C upon Y, MPC is equal to change in C upon change in Y. और जो आपका slope of C function है वो हम इससे denote करते हैं, ना कि इससे. क्यों? क्योंकि slope जो है that is changing. Okay. Now let us see the features of MPC. MPC is always positive. It is neither zero or negative. Okay. Why it cannot be zero or negative? Because MPC is, as I told you, it's a एडिशनल एंड एडिशनल कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके, अब आपकी इनकम जो है 100 से 150 हुई है, तो चेंज इन इनकम कितना हुआ? 50 हुआ ना. तो 50 कैन नॉट बी नेगेटिव ना, और कैन नॉट बी जीरो. एडिशनल कभी भी आपका जीरो या नेगेटिव नहीं होता. आपने पानी पिया, दूसरा गिलास पीने के बाद चौथा गिलास पानी पिया, तो आपने जो 4th गिलास पानी लिया वो चेंज इन कितना हुआ? 2 हुआ. तो इट कैन नॉट बी इन नेगेटिव. ऐसा तो नहीं है ना 2 के बाद 0 आ गया, 2 के बाद -4 आ गया. इट कैन नॉट बी पॉसिबल. सो एमपीसी इज ऑलवेज पॉजिटिव. इट इज नीदर जीरो और नेगेटिव. एमपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. ओके, इट मीन्स अगर इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ती है. एमपीसी इज ऑलवेज लेस देन 1 मतलब इनकम. ठीक है, अब आपको पता है कंजप्शन जो है दैट इज एमपीसी जो है, सी इज ऑलवेज चेंज इन, जो आपकी इंक्रीज इन सी है वो हमेशा कम रहता है चेंज इन इनकम से. ओके, इंक्रीज इन कंजप्शन इज ऑलवेज लेस देन इंक्रीज इन इनकम. आप टेबल लर्न कीजिए, उसमें देखना कि कंजप्शन जो है वो बढ़ रही है बट हमेशा कम बढ़ती है इनकम से. सो कंजप्शन इज ऑलवेज लेस देन इनकम. ओके, नेक्स्ट इज MPC is increases with MPC is decreases with decrease in income. अगर इनकम कम होती जाएगी तो MPC भी डिक्रीज करता जाएगा. ओके, सो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ हियर. ठीक है, दैट इज जीरो इज लेस देन MPC, और यू कैन से दैट MPC इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. ओके, सो MPC इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. ओके, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे बिकॉज इन द CBSE बोर्ड दे कैन आस्क यू द फीचर ऑफ MPC एंड यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग. नेक्स्ट इज फीचर ऑफ APC. ओके, APC इज ग्रेटर देन 1 मीन्स कंजप्शन इज ऑलवेज मोर देन इनकम. ओके, मार्जिनल जो है आपकी, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम कैन नॉट बी मोर देन कंजप्शन. इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती, बट APC can be more than income. It means consumption can be more than income. APC can never be negative. Okay, as this is not equal to negative. Okay, APC जो है वो कभी भी negative नहीं होता है because consumption cannot be negative. There is always a minimum level of consumption. APC is equal to 1 or you can say that C is equal to Y. Okay, अगर आप देखें डायग्राम को, so C is equal to Y at break even point. Okay, C is equal to Y. Okay, and if income is increasing, APC is decreasing. Okay,
with the MPC income has a positive relationship, with the APC income has a नेगेटिव रिलेशनशिप. ठीक है, सॉरी कंजप्शन. अगर इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन कम होती है. इट मीन्स कंजप्शन कम होती है मतलब उस अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ती है जितनी अकॉर्डिंगली इनकम बढ़ती है. स्लोप ऑफ सी फंक्शन इज इंडिकेटेड बाय एमपीसी नोट बाय एपीसी. ओके, स्लोप ऑफ सी फंक्शन क्योंकि ये चेंज को दिखाता है एंड चेंज कैन बी इन मार्जिनल, एडिशनल, कैन नॉट बी एपीसी. Last topic of this is linear consumption curve. Okay, linear consumption curve means that is constant MPC is called linear consumption curve. Okay, that you can see over here the consumption is increasing, but if you will see जब ये ऐसी लाइन बनती है ना तो इसका मतलब होता है कि that is changing but in a constant ratio. Constant ratio like 0, 20, 40, 60. Income is also increases in a constant ratio. Clear? So shown by straight line consumption function curve, this is called linear consumption function. Okay, so you are supposed to learn the formula here. It will help you in the numerical as well. C is equal to C bar plus by. C is equal to C bar plus by. C is a consumption function. C bar is a autonomous consumption. Autonomous consumption कौन सी है? मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन कब होती है? जब इनकम जीरो होती है. B क्या है? MPC है और B is MPC and MPC is equal to change in C upon change in Y. Okay, Y is your income. Okay, so C bar or autonomous consumption or minimum level of consumption can be greater than 0. Okay, so here you can see that B is always positive. Ranges between B मतलब MPC. MPC हमेशा पॉजिटिव होता है. It ranges from 0 and 1. 0 और 1 के बीच में रहता है and B is constant. MPC is always constant. Thank you.